Good morning students and welcome again to our economics class. In last class we studied about aggregate demand. What is the meaning of aggregate demand? What are the components of aggregate demand? C plus I plus G plus NE. Then how we can be through the aggregate demand schedule and diagram and what are its different features. In today's class we study about second component, it's aggregate supply. Today we study what is the meaning of aggregate supply, then how aggregate supply is equal to the national income and what are the components of aggregate supply, their explanation with the help of schedule and then with the help of diagram, what is the slope of aggregate supply curve and why. We study all these in today's class. First we start from the aggregate supply meaning. एग्रीगेट सप्लाई होता क्या है? जैसे हमने बात किया था एग्रीगेट डिमांड, सिमिलर वे में कंसेप्ट है एग्रीगेट सप्लाई. आपने 11th क्लास के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है सप्लाई के बारे में, मीनिंग ऑफ सप्लाई, इंडिविजुअल सप्लाई, मार्केट सप्लाई. ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एग्रीगेट सप्लाई. एग्रीगेट सप्लाई शो द टोटल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी बाय द प्रोड्यूसर इन एन फाइनेंशियल ईयर. कि पर्टिकुलर ईयर में जो भी गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई प्रोड्यूसर्स करने को तैयार होते हैं एट डिफरेंट प्राइस लेवल, इट्स नोन एज एग्रीगेट सप्लाई. इन एग्रीगेट सप्लाई विल इंक्लूड टू कंपोनेंट्स, दीज आर कंजम्पशन एंड सेल. और एग्रीगेट सप्लाई की जब हम बात करते हैं तो एग्रीगेट सप्लाई हमेशा किसके इक्विवेलेंट होता है? इनकम लेवल पे. इट मींस नेशनल इनकम. एग्रीगेट सप्लाई is always equal to the national income. Why? अगर हम किसी इकोनॉमी के अंदर जब गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन के लिए हमारे को डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होती है. वी नीड लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज और एंटरप्रेन्योर फॉर द प्रोडक्शन पर्पस. एंड व्हेन इन एन इकोनॉमी दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूज्ड, some reward or remuneration is given to these factors of production against their production services in the form of rent, wages, interest and profit. When we add this factor payment in the form of rent, wages, interest and profit at the national level or earned by the normal resident of the country, it becomes equal to the national income or NNBFC. So aggregate supply is always equal to the national income. Here the meaning by national income is a disposable income, national disposable income, which the consumer either can consume or either can save. यदि आपके सिलेबस में नहीं पहले था ही कंसेप्ट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम के किसी कंट्री की जो टोटल इनकम है नेशनल इनकम, उसका क्या पार्ट हम डायरेक्टली या तो कंज्यूम कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं. हमें जितने इनकम मिलती है उसका कुछ पार्ट हमें गवर्नमेंट को एज ए टैक्स या एज ए फाइन पे करना पड़ता है. तो रिमेनिंग जो इनकम हमारे लिए बचती है इट इज द डिस्पोजेबल इनकम. और जिसको कंज्यूमर है तो कंज्यूम करेगा या फिर वो क्या करेगा? सेव करेगा. आई रिपीट इट अगेन. एग्रीगेट सप्लाई मींस एग्रीगेट सप्लाई शो द टोटल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी बाय द प्रोड्यूसर एंटरप्राइजेस इन ए पर्टिकुलर ईयर. एक पर्टिकुलर ईयर में जो प्रोड्यूसर टोटल गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई करने को तैयार हैं एट द डिफरेंट प्राइस लेवल, देयर सम इज द एग्रीगेट सप्लाई. इट हैव टू कंपोनेंट्स, कंजम्पशन एंड सेल. दो कंपोनेंट हो गए इसके, C plus S, कंजम्पशन एंड सेलिंग. एंड एग्रीगेट सप्लाई इज ऑलवेज इक्वल टू द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री. एग्रीगेट सप्लाई इक्वल NNPFC. व्हाई? जब हम किसी भी इकोनॉमी के अंदर गुड्स और सर्विसेज का जब प्रोडक्शन करते हैं तो हमारे को प्रोडक्शन के लिए डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज में लेने पड़ते हैं. और जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज में लेंगे तो उनको यूज में लेने के अगेंस्ट हम उसको कुछ ना कुछ रिवार्ड या रिम्यूनरेशन पे करेंगे. इट डिपेंड्स ऑन देयर प्रोडक्टिविटी एंड दिस रिम्यूनरेशन और रिवार्ड इज नोन एज फैक्टर पेमेंट एंड द सम ऑफ दिस फैक्टर पेमेंट बिकम्स इक्वल टू द नेशनल इनकम इफ इट इज रिसीव्ड बाय द normal resident or it's generated in the you can say that the total national level in an economy. Now we see it with the help of book. Aggregate supply refer to the total money value of all final goods and services that
producer willing to supply in an economy in the given period of time or in a financial year. तो एक साल में जो भी गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई प्रोड्यूसर्स करने को तैयार हैं उसका सब हमारे लिए क्या हो जाएगा, एग्रीगेट सप्लाई. When aggregate supply is expressed in physical terms, it refers to total output of goods and services in an economy. Aggregate supply क्या बता रहा है हमारे को कि हम किसी इकोनॉमी के अंदर कितनी क्वांटिटी में टोटल गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, टोटल गुड्स और सर्विसेज कितनी है किसी भी इकोनॉमी के अंदर. We know that value of total output is distributed to factors of production in the form of rent, wages, interest and profit. The sum total of these factor income, it means rent plus wages plus interest plus profit at domestic and national level is known as national income. So we can say that aggregate supply and national income are one and the same thing. तो aggregate supply की अगर बात करें, national income की बात करें, both are the same concept and both are the one thing. So I think it's clear what is the aggregate supply. And aggregate supply is always equal to the national income of an economy. तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एग्जाम के अंदर तो आपके एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, टिक द करेक्ट, मेजर पॉइंट सब आते हैं. ठीक है, पेपर पैटर्न चेंज हुआ लास्ट ईयर से, तो आपको इस तरह के जो 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस करना, आपको याद रखना है एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू द नेशनल इनकम. नाउ वी सी व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ दिस एग्रीगेट सप्लाई. देयर आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई. These are consumption and saving. Now we spread it with the help of schedule and then diagram. In the schedule we take income, consumption, saving and aggregate supply in the economy. Both are given in crore rupees. And we find aggregate supply by consumption plus saving. Aggregate supply is the sum of consumption and saving in the economy. And all figures are given in rupees crore. First we take the income. The income level is 0, 40, 80, 120, 160 and 200 crore. It is a imaginary table. किसी इकोनॉमी का हमने इनकम लेवल लिया और वो सेम रेट से इंक्रीज हो रहा है. Then consumptions 20, 50, 80, 110, 140 and 170. These are the consumptions level. And as we know that in an economy as income increase, consumptions also increase. But consumption increase at a lower rate than the increase in income. So we can say that it's known as psychological law of consumption, which is given by GMPs. क्या बता रहा है हमारे को कि किसी इकोनॉमी के अंदर जैसे इनकम बढ़ती है तो इनकम बढ़ने पर कंजम्पशन लेवल भी इंक्रीज होंगे. नेक्स्ट वी हैव द सेविंग. एंड हाउ यू फाइंड सेविंग? Y माइनस C. हमने सेविंग कैसे फाइंड करा? इनकम में से आपने कंजम्पशन को लेस कर दिया. 0 minus 20 minus 20, 40 minus 50 minus 10, 80 minus 80 0, 200 minus 110 10, 160 minus 140 20, 200 minus 170 30. So it is the saving level in the economy. And income level and saving level both are also positively relates with the each other. यहाँ पर हम देखते हैं जैसे इनकम लेवल इंक्रीज हो रहा है तो इनकम लेवल इंक्रीज होने पर इकोनॉमी में सेविंग लेवल भी इंक्रीज हो रहा है. जिस हमारी इनकम बढ़ती जा रही है तो हमारी सेविंग्स भी क्या हो रहा है? इंक्रीज होती जा रही है. एंड देयर सम इज द एग्रीगेट सप्लाई. कंजम्पशन प्लस सेविंग 20 प्लस माइनस 20 0, 50 प्लस माइनस 10 40, 80 प्लस 10 80, 110 प्लस 10 120, 140 plus 20 160, 170 plus 30 200. So it is the aggregate supply level in the economy. If you see carefully you find that income level and aggregate supply level both are same or equal in the economy. जो हमारा income level है और aggregate supply level है दोनों बिल्कुल सेम आएंगे, इसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं होगा. At all levels of income aggregate supply is always equal to its income level. यहाँ भी आप देखेंगे 0 0, 40 40, 80 80, 120 120, 160 160 and 200 200. So national income level and aggregate supply level both are same thing and both are similar at each level in the economy. Now we see diagram. In this diagram we draw only the aggregate supply curve. On the x-axis we will take the income level and on the y-axis
we take the aggregate supply, which is the sum of consumption and saving. The income level is 40, 80, 120, 160 and 200. And the aggregate supply is same 40, 80, 120, 160 and 200. When you draw this diagram, you have to take one precaution that the difference between income level and aggregate supply level on x-axis and the y-axis will be same. आप क्या करेंगे, जब इस डायग्राम को ड्रॉ करेंगे तो इनकम लेवल और जो एग्रीगेट सप्लाई लेवल है उसका जो मेजरमेंट यूनिट्स आप ले रहे हो उनके जो बीच का डिफरेंस है वो सेम रहेगी. मतलब यहाँ पर 040 का जो डिफरेंस आ रहा है सेम डिफरेंस हम y एक्सिस पर लेंगे एंड सो ऑन. And according to schedule, income level is 40, 80, 120, 160, 200, and the aggregate supply is 40, 80, 120, 160, and 200. Okay. When income level is 0, aggregate supply also 0, according to the schedule. When income level is 40, aggregate supply also 40. When income level 80, aggregate supply also 80. When income level 120, aggregate supply also 120. When income level 160, aggregate supply also 160, and when income level 200, aggregate supply level also 200. And we match all these points with the help of scale. Then we find the aggregate supply line, and this aggregate supply line is always make a 45 degree angle. अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो इस पर क्या बन रहा है 45 degree angle. So aggregate supply curve is always match the 45 degree angle, and it's also known as 45 degree curve. जो aggregate supply curve है इसको क्या बोला जाता है 45 degree curve, because at different level of national income aggregate supply always equal to the national income. और इसको जब डायग्राम आप ड्रॉ करोगे तो ड्रॉ करते टाइम आपको प्रिकॉशन रखना है कि आपका इनकम और एग्रीगेट सप्लाई का जब आप मेजरमेंट कर रहे हैं तो उनके बीच का डिफरेंस आप सेम लेंगे. तो आपका जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो हमेशा क्या आएगा आपका 45 डिग्री लाइन, एंड इट इज द सम ऑफ कंजम्पशन एंड सेविंग. So we study all this in today's class. We repeat it rapidly. हम इसको एक बार जल्दी से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं. हमने बात की एग्रीगेट सप्लाई. Aggregate supply show the supply of goods and services in an economy by the different production units in the financial year. एक फाइनेंशियल ईयर में जो टोटल सप्लाई हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का उसका सम हमारे लिए क्या हो गया एग्रीगेट सप्लाई. सेकंड, दिस एग्रीगेट सप्लाई इज ऑलवेज इक्वल टू द नेशनल इनकम. जब एग्रीगेट सप्लाई कर रहे हैं इकोनॉमी के अंदर तो हमारे को शो कर रहा है कि टोटल सप्लाई कितना हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का नेशनल इनकम में. अब टोटल सप्लाई कितना हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का किसी इकोनॉमी के अंदर. जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन के लिए हमारे को डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट्स होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल एक्सेट्रा, और उनको जो रिवार्ड दिया जाता है उस रिवार्ड का सम हमारे लिए क्या हो जाएगा नेशनल इनकम. सो एग्रीगेट सप्लाई ऑलवेज इक्वल टू द नेशनल इनकम इन द इकोनॉमी. सो एग्रीगेट सप्लाई इक्वल C plus S, consumption plus saving. These consumption and saving are components of aggregate supply, and aggregate supply equal to income. It means income also equal to consumption plus saving in the economy. Now we set schedule, and according to schedule we take income level at different levels 0, 40, 80, 120, 160, 200. Then we take the consumptions and we find the saving. How we find income minus consumption, which is minus 20, minus 10, 0, 10, 20, 30. Then we have the aggregate supply, which is the sum of consumption and saving. And this aggregate supply always equal to the national income level in the economy. Then we draw the diagram of aggregate supply. For the diagram of x-axis, we take the income level. On the y-axis, we take the aggregate supply, which is the sum of consumption and saving. And it's 40, 80, 120, 160, 200. When we draw the aggregate supply curve, it's always in 45 degree line, because at each level aggregate supply equal to national income in the economy. Okay. So in today's class we study all these. In the next class we study consumption function or propensity to consume. It is of two types: average propensity to consume and marginal propensity to consume. What are their meaning and what are their relations? And then we study saving functions.
meaning of saving functions, and different types, average propensity to save and marginal propensity to save. Okay,